Hello everyone and welcome to the channel. My name is Manjeet and today I will be recommending a movie जो मैंने थोड़े टाइम पहले देखी है एंड हालांकि इस मूवी की एक थिएट्रिकल रिलीज पिछले साल हुई थी एंड एक छोटी सी ब्रीफ रिलीज इस साल की स्टार्टिंग में हुई थी बट मैंने ये अब देखी है व्हेन इट हैज़ अराइव्ड ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म. इस मूवी का नाम है संदीप और पिंकी फरार एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिवाकर बनर्जी एंड इट इज़ रिटन बाय वरुण ग्रोवर एंड दिवाकर बनर्जी. So these were the primary reason because of which I watched this movie. I'm a big fan of Varun Grover as well as Dibakar Banerjee. Dibakar Banerjee ki LSD, Byomkesh Bakshi and now Sandeep and Pinky Faraar are highlights of some of his great filmography. And on the other hand, I'm a massive fan of Varun Grover. एंड कभी कभार लगता है कि ऐसा शायद ही कुछ कंटेंट रह गया हो जो उनका मैंने नहीं देखा है यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर. So this was like one of the key reasons why I was pretty excited for this movie, and now seeing कि इस मूवी को इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, I am really happy about it. Let me tell you about the plot of this movie. मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पॉइलर ना दूँ because it's a thriller eventually, and the plot mainly starts from the character of Pinky, who is portrayed by Arjun Kapoor, who is a constable in Haryana Police, and वो एक साल से सस्पेंड चल रहे हैं अपनी नौकरी के लिए. एंड फिर एक उनके हेड होते हैं जयदीप अलावत, उन्हें एक टास्क असाइन करते हैं जो कि मूवी में त्यागी के नाम से. द टास्क ऐसी थी, उन्हें संदीप वालिया को जो कि होटल में है उनको एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पहुंचाना है. एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क बट देन दे रियलाइज कि दिस इज़ नॉट द प्री प्लान प्रोसेस. बीच में उनका एनकाउंटर करने वाले थे कुछ पुलिस वाले बिकॉज इट्स अ लाइक रिग्ड थिंग, इट्स अ वेरी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व प्रोसेस. बिकॉज संदीप वालिया जो है वो एक बैंक में काम करती थी जहाँ पर लाइक शी हैज़ मेड अ स्कैम पॉसिबल एंड नाउ शी इज़ लाइक थ्रेटनिंग हर बॉस, शी इज़ ऑल्सो ब्लैकमेलिंग हर बॉस. एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कनेक्शन दैट द बॉस ऑफ सैंडी वालिया हैज़, ही हैज़ प्लान दैट वो मिडवे ही उनका एनकाउंटर करा देंगे एंड ही विल टर्मिनेट द होल थिंग. बट द थिंग इज़ कि उनका एनकाउंटर होने से वो बच जाते हैं एंड दे इलो फ्रॉम दैट प्लेस. एंड फिर उसके बाद फिर दे आर ऑन द रन एंड उसके बाद फिर भागते भागते उत्तराखंड में पहुंचते हैं. उसके एक छोटे गांव पिथौरगढ़ वो जगह है वहाँ पहुंचते हैं एंड दे फाइनली डिसाइड दैट दे नीड टू क्रॉस द बॉर्डर एंड दे नीड टू रीच नेपाल इन ऑर्डर टू बी सेफ. सो टू समराइज दिस मूवी इज अबाउट टू पीपल हु आर ऑन द रन फ्रॉम द करप्ट लॉ हु इज काइंड ऑफ controlled by the corrupt capitalist. There are a couple of things that I very much liked about this movie. First was the acting part of the movie. Like lead ने तो अच्छी acting करी है but the casting is so good that each and every character is like perfectly placed. Whether it is Jaideep Ahlawat, whether it's Raghuveer Yadav or it's Neena Gupta और बाकी जो भी characters इस movie में सबने बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है. And like personally I'm also like a very big Raghuveer Yadav fan. Like जिस movie में भी वो होते हैं that movie is bound to be special. And like we say it in internet slang कि he is a national treasure that should be preserved. He is one of the greatest actors who are working in the industry today. The second thing that I like about this movie is how the subplots play out in the movie. I won't be calling them subplots because I think कि यही main elements थे जो कि पूरी story का structure बनाते हैं संदीप और पिंकी फरार का. And I think that this is mainly because of the writers that are involved in the making of this movie, that is Varun Grover and Dibakar Banerjee. Because of their own very refined thought process, they are able to like present a very refreshing take over certain issues that are very prevalent in our society. मतलब there are elements of patriarchy, classism, capitalism, police brutality and all other elements that find their place in the plot of Sandeep and Pinky Faraar. And the way they are like shown is absolutely refreshing and I think that कि उन्होंने बिल्कुल ही preachy होने का तरीका यूज़ नहीं करा and that is what I really like about it. एक particular scene है इस movie में, I think ये part थोड़ा सा spoiler होगा. एक particular scene इस movie का which will eventually stay with me for a long time. That scene is where Raghuveer Yadav's character for the final time sees Sandeep and Pinky, and that is where Sandeep has taken the risk to meet Raghuveer Yadav's character for the final time to give him the money that he has invested in the scam of Parivartan Bank, a fictionalized bank made in the movie. And in that scene, the character of Raghuveer Yadav totally lashes out in front of Sandeep and Pinky, and he doesn't even acknowledge them. And that scene like gives you the idea कि in that moment, that person doesn't really care about the health of his wife, doesn't really care about the money that he is going to need. All he cares about is his futile self-respect in front of the society. And that is one of the most effective scenes in the movie. And I think इस movie में इतने सारे scenes हैं जो ऐसे ही हैं and that will make you think and that will make you think very hard. So this is a movie that I really liked and I think that this is one of the best Hindi movies that I've seen this year and I think that you should definitely watch this movie and it has a very strong theme. So this is one thing you should be aware before you are going to watch it. So yeah, that was with the recommendation today and until then keep watching movies and take care of yourself.